और ठीक है, मेरे वापस पास भी कोशिश है, मैं करेंगे भी कि रिकॉर्ड कर लें। सर सारे नाम नहीं भी करें, रिकॉर्ड करें बस सर? एक ही दफा कर लें, बाकी छोड़ दें सबको। ठीक है, बाकी रिकॉर्ड दिखा दीजिएगा सबको। ठीक है सर। करें। चलें, जब तक वो आए अभी क्या नाम है? सर जी जी। मिस अनम बैठी हैं, अभी ऑनलाइन है अभी आप? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। शुड वी स्टार्ट? हाँ जी, स्टार्ट करेंगे। इसका नाम रिकॉर्ड नहीं ओके। करना। Hera, can you please record this roadshow? And Fatma, we can start now. Fatma, are you there? Okay, Assalamualaikum everyone. This is Fatma Samila representing Huawei Technologies Pakistan today. I just want to confirm, is my voice clear? If I'm perfectly audible, I think we can start. Yes, ma'am. yes, your voice is clear. Okay, okay. A small request from everyone. We would love to see you as well. And at the end of the session, we'll try to take a screenshot with everyone. तो उससे पहले, if everybody could, test their cameras, give a thumbs up, and in the end we can take a screenshot. ठीक है? Ma'am. Okay, ma'am. So, I'd like to start here. By introducing myself, I'm Fatma Samila from Huawei Technologies Pakistan. I represent the talent ecosystem development team, and the ICT competition is one of our major marketing activities which we do every year with our ICT academies, universities of Pakistan. I'll be sharing details of our competition, but before that, I would like to thank the team of Sindh Agriculture University, for putting up, Thank you, ma'am. efforts. Yeah, and I think we have 60 people who've Thank you, ma'am. successfully joined today's session. It is great to be here with you. It is very unfortunate that because of COVID-19, travel restrictions, and other restrictions where we cannot have events, we cannot have gatherings. But let's all pray that inshallah in the coming days, maybe by the end of this year or next year, our team can visit your campus, and we can have an interaction on your campus. So thank you very much to the entire team. A small request, if you could turn off your mics for just a small while, ताकि we'll have interaction, question answers. But meanwhile, अगर आप लोग अपने माइक बंद कर लें, या अगर आपके मीटिंग होस्ट जो है वो इस बात को कंट्रोल कर ले, तो बी ग्रेटफुल, ताकि कोई और आपकी वजह से जो है ना जी जी। डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, सारे इट बी लोग ग्रेट. प्लीज माइक बंद कर दें, अपनी माइक So ऑफ कर लें सारे लोग, while ताकि हम आवाज सबको सही से सुनाई दे। और भी हमें स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, सर सोहराब, while आप that is भी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा प्लीज। so while people are still joining in, मैं देख रही हूँ, तो ऐसे करते हैं that before we move on, हम एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं रिगार्डिंग द कंपटीशन. उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगी कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करना है, Huawei का इंट्रोडक्शन दूंगी, and further on we'll have some short
question answers, and we've got some gifts planned for you as well. तो एक वीडियो देखते हैं. अगर आप लोगों में से कोई एक मुझे कंफर्म कर दे that you can see my screen. If my screen is visible, I can start the introduction video. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's see. Yes, ma'am, an आपकी introduction screen video. visible है. एक छोटी सी वीडियो है of less than 5 minutes. तब तक we'll hope कि all the participants जो कि join कर रहे हैं वो भी successfully join कर चुके हैं. Okay. So let's see a small video. Okay. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम, वॉइस नहीं आ रही आपकी. Okay, वीडियो की वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? मैम आ रही है. मैम अभी आ रही है. आ रही है मैम, आ रही है. Okay. यस मैम आवाज आ रही है. मैम वीडियो शो नहीं हो रही स्क्रीन पे स्टूडेंट्स को. मैम Can anybody confirm? Because मुझे कुछ confirmations आ रही हैं कि वीडियो शो हो रही है, कुछ आ रही है कि नहीं शो हो रही. शो नहीं आ Let me- रही, शो नहीं हो रही मैम. No, ma'am, नहीं हो रही मैम आवाज आ रही है. Okay, let me stop आवाज आ sharing रही and है I'll बट वीडियो share शो नहीं हो again. रही. Okay. So let me stop sharing and share again ताकि फिर उसके बाद मुझे कोई हिरा आप confirm कर दे. जी मैम मैं कर दूंगी. There is an error which is occurring when I try to share. Hira, can you check? Is there any kind of privilege you need to grant me? Okay ma'am, I'm checking. Okay. So we've got 72 participants. Participants have just joined. Welcome to the Huawei ICT competition 2021 Middle East Pakistan Roadshow. We will just head towards introducing Huawei and our competition. उससे पहले I wanted to show you a small video. Hira is checking why my screen isn't visible. And once we're done with that, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? देखें. नहीं हो रही. हाँ मैम हो रही है. जी हिरा हो रही है. आपकी जी हिरा आपकी स्क्रीन शो हो रही है. ओके मैम, यहाँ से प्रिविलेजेस तो कोई भी मुझे ऐसा कोई मसला नहीं लग रहा. यहाँ से सब ओके है. ओके. वहाँ पे जो होता है, अस्सलाम वालेकुम, वहाँ पे एक स्लाइड शेयर का ऑप्शन होता है. मे बी वहाँ से आप जी. एक्चुअली व्हेन आई शेयर तो उसके साथ एक एरर आ जाता है. कांट शेयर योर स्क्रीन. Okay, let's do one thing. Let me ask my colleague Hassan if you could share your screen. All right, I'll just try. Okay. Okay, is my screen visible now? No no, ma'am. Shared my screen. So Fatma, can you please confirm? यस सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है. यस सर आपकी हो रही है. Okay, Hassan, Okay, sure. please help me share the video. हाँ, because मेरे Yeah. screen sharing नहीं है.
Okay, so let's see the video. Thank you so much, and we really thank you for waiting. जब तक हमारा IT issue था. Yep, so here you go. So let's see a small video. The world around us today has changed as we know it. COVID-19 Sir, has sir. impacted the world, Sir. changing the way we live, work, learn, and communicate, creating massive challenges not only for governments, Yes, healthcare sir. systems, but Sir. also businesses, Sir, sir. industries, trade, tourism, and much more. Sir. Fortunately, technology is ensuring business continuity, providing our economies with a fighting chance for survival. Hello, sir. From online education to remote working, online public services to e-commerce and digital हाँ सर, banking, जगह हाँ जब बिल्डिंग हाँ we are सर, able जी to सर, continue our lives due to a resilient जी सर, ICT infrastructure. हाँ हाँ As we adapt to the changing global सर मुझे ये थोड़ी हले भी मीटिंग करता करता सारी की ध्यान कर जी सर ऑनलाइन मीटिंग का थोड़ी हाँ सर ठीक है जी ठीक है is bound to be one of the drivers that will drive strong transformation in this new era. The focus today is on sustainable development, the need to build a strong and reliable digital economy, and driving digital transformation across sectors. Our nations across the world today are working swiftly to resolve the current crisis. They are also continuing to invest proactively in ICT and education to not only beat the impact of the pandemic, but also create a sustainable model for the future. ICT technology is the cornerstone of any country's economic prosperity. It promotes equal access to education and serves as a building block of digital skills education, leading us to a new era of intelligence and new economic opportunities. There is no time greater than now to invest in talent development, specifically in the ICT sector, to ensure an ample supply of qualified people to realize the ambitious national plans of the regional leaders. As the world's leading ICT company, Huawei has taken the lead to make a concerted effort to drive this digital transformation. Students and young ICT champions are a vital part of our strategy and vision to help drive digital transformation in these challenging times. The Huawei ICT competition has a global platform to gather governments, higher educational institutions, the growth of young ICT professionals, building the ICT and ultimately inspiring innovation. Huawei ICT competition Middle East 2021, the ultimate battle for the finest ICT talent in the region. This year's edition will feature participants from 10 nations, including Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. We witnessed a highly successful edition in 2020. 20 ministries and government authorities collaborating with Huawei, participation from 442 universities, and over 2,000 student registrations. रहमान आयो पूछेगा बार बार रहमान आयो था एक मेरे को तो ना मिले वो हमला थी मेरे पास फोन लिख लिया हाँ ठीक है This October, participants will compete in roadshows, national मुझे शायद अलग चला competitions, से पूछेंगे मुझे शायद मतलब देर साथ ही आना है हाँ सर बस यो क्योंकि मैं इंडस्ट्री को पहुंचा मीटिंग में ग्राइंड मार्क्स वाली बात हो रही है 5G, AI, cloud, कि तो हले भी तो ये हवा भी मीटिंग हाँ सर ठीक है तो थोड़ा बहुत हमारे जो टेक्निकल लेवल की है चलो ठीक बीसी दावा गया था मीटिंग वो था Middle East तो हमारे 2021, ट्रेन आपको बताया मैं फोन था उधर ये मीटिंग कर the top prize of $20,000 for the ultimate winners. Visit www.huawei.
मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम स्क्रीन ऑफ हो गई अभी। मैडम की आवाज नहीं आ रही है। वेट करें। ओके। Thank you very Please much. wait for Thank you, Hassan. my I hope you guys enjoy the video. It was a very interesting video regarding our competition. Briefly summarizing, our work. I would also like to welcome one of my colleagues from Middle East Talent Ecosystem Department, Mr. Charles. Charles, if you could say hello to everyone. I can't even where this. Okay, so I have a very small presentation for everyone. I hope my screen is visible now. Yes, ma'am. Okay, so if my screen is visible, if my screen is visible and you guys can hear me, please confirm so that we can Your start. screen is visible now. Okay, thank you. So we saw a very short video, a 5-minute video of the changing technology trends, the current situation, Huawei's talent development activities, and our competition. In a very short brief. Let's now discuss, in detail regarding our activities and the competition. But before we start, before we talk about the competition, let's talk about Huawei. Huawei kya hai? What are our businesses? What are we doing? So whenever we talk about Huawei, हम किसी भी नए यूजर से जब बात करते हैं, जब मिलते हैं, तो एक जनरल पर्सपेक्टिव जब Huawei का हमें मिलता है और हमें फीडबैक मिलता है, वो ये मिलता है कि हम डिवाइसेस बना रहे हैं, वेयरेबल्स बना रहे हैं, सेल फोन्स बना रहे हैं। Huawei एक सेल फोन बनाने वाली कंपनी के तौर पे ज़्यादा जाना जाता है इन जनरल पब्लिक एज कम्पेयर टू आवर अदर बिजनेसेस। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगी हमारे बिजनेस से रिलेटेड, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए टू एवरीबडी हु इज़ हियर कि हम सिर्फ सेल फोन्स नहीं बनाते, हम सिर्फ डिवाइसेस नहीं बनाते, हमारा बिजनेस बहुत फास्ट है। इफ वी टॉक अबाउट एक global profile overview, so we've got 197,000 employees throughout the globe, ठीक है, और हम 170 plus countries and regions में हमारी presence है। When we talk about regions, so different countries का cluster makes a region, and Huawei has several regions around the globe. Pakistan office comes under the Middle East region, इसीलिए जब हम competition की बात करें तो आपको banners में, materials में Middle East नजर आएगा, because Pakistan comes under the Middle East region. Now, from our employees, which I mentioned, to 197,000 employees here throughout the globe, around 3,000 plus employees are here in Huawei Pakistan की physical presence है, we've got a huge workforce here in Pakistan जो कि सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, and our teams are here, our partners are here.
ठीक है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी वो ये है कि Huawei, अगर आप स्क्रीन पे फिगर्स देखते हैं, 53.4% ऑफ आवर टोटल एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द R&D सेक्टर। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? वर्ल्ड में नंबर 3 हम कंपनी है हु आर इन्वेस्टिंग इन R&D। देखिए, अगर एक कंपनी जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करे और उसको सेल करे, दैट इज नॉट ऑल, ठीक है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम व्हाट आर वी डूइंग, आगे आने वाले ईयर्स के लिए हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं। सो एज अ कंपनी हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हम विद टाइम रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। So that is the reason Huawei is number 44 in the global 500. And जैसे मैं पहले mention कर रही थी, we were not just making devices, smartphones, wearables, and other जो चीज़ें आप घर में देखते हैं, but Huawei का एक बहुत major business जो है that is coming from our career, enterprise and cloud side. Now career, enterprise and cloud side आपको obviously अपने घरों में, अपने हाथों में नज़र नहीं आता, इसीलिए हम सबको ये लगता है, नए यूजर्स को ये लगता है कि Huawei एक सेल फोन बनाने की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ मच मोर देन दैट। हमारा जो कैरियर बिजनेस है, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो आपके पास मोबाइल सिग्नल्स आ रहे हैं, इट इज़ कमिंग थ्रू सम इक्विपमेंट, ठीक है। आप लोग सारे टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, यू नो फॉर अ फैक्ट कि इक्विपमेंट है, बैक एंड इक्विपमेंट है, BTS है और बहुत सारे टावर्स हैं, पीछे जो है MSCs है, उन सब पे इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है। वो इक्विपमेंट किस कंपनी का है? तो वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर्स इन टेलीकॉम कंपनीज इन पाकिस्तान एज वेल इज Huawei। एंड उसके अलावा देयर अदर स्मॉलर एंटरप्राइज नेटवर्क। When I say smaller, इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क नहीं। When I say smaller, तो कैरियर नेटवर्क से smaller are enterprise networks, जिसके अंदर बहुत popular examples हैं, like the safe city projects, like the smart education projects, video conferencing systems and banking के systems है, security systems है, they come all under the enterprise systems. And then we've got our cloud business group, जो कि recently कुछ सालों पहले introduce किया गया है, जिसमें Huawei का अपना public and hybrid cloud जो है that has been deployed in Pakistan, providing services like storage, intelligent vision, big data, databases, clusters, सारा का सारा। So I hope थोड़ा सा मैं clear कर पाई हूँ Huawei का ओवरऑल बिजनेस, कि Huawei सिर्फ डिवाइसेस नहीं बनाता, वी हैव अ ह्यूज मार्केट व्हेन इट कम्स टू एंटरप्राइज, कैरियर एंड क्लाउड बिजनेसेस। और हमारा एम जो है वो यही है कि वी कनेक्ट पीपल इंटेलिजेंटली, गिव देम अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस थ्रू प्रोवाइडिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट connecting people, back in 2000 या 2000 से पहले की अगर हम बात करें तो मेन जो पर्पस था of ICT, it was to connect people, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, अगर हम अपकमिंग 5 सालों की बात करते हैं, तो जस्ट कनेक्टिविटी इज नॉट इनफ। स्मार्ट इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी is what we are trying to achieve. Now all things are not only connected, but they are also sensing and they are helping you make intelligent decisions. There 10 mega trends आपके सामने मेरी स्क्रीन पे हैं, इसमें से बहुत सारे तो हम अचीव कर भी चुके हैं, एंड इन द कमिंग 2 to 3 years हम और मेगा ट्रेंड्स अचीव करेंगे, जिसमें 5G रैपिड रोल आउट्स है, डिजिटल गवर्नेंस है, फ्रिक्शनलेस कम्युनिकेशन है, ऑगमेंटेड क्रिएटिविटी है, जीरो सर्च है। हम जीरो सर्च की बात करते हैं तो जीरो सर्च क्या है? आज अगर इफ यू टेल योर फ्रेंड दैट आप एक सेल फोन खरीदना चाहते हैं, तो बिलीव मी, अगले 10 दिन आपके न्यूज़ फीड में आपके पास जो एडवर्टिजमेंट्स आएंगी आपके सेल फोन पे, आपके पास जो स्पॉन्सर्ड मटेरियल आएगा, वो सारा रिलेटेड टू सेल फोन आएगा। वो क्यों होगा ऐसा? बिकॉज योर स्मार्ट डिवाइस इज नॉट जस्ट अ सेल फोन। हम सेल फोन को स्मार्टफोन्स क्यों कहना शुरू हो गए? इसलिए बिकॉज दे आर नॉट जस्ट कनेक्टिंग यू नाउ, बट दे आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट एंड दे आर सेंसिंग।
वो आपके अराउंड जितना डेटा है उसको सेंस कर रहे हैं एंड उसको सेंस करके आपको सजेशंस दे रहे हैं। सो जीरो सर्च का कॉन्सेप्ट ही एआई बेस्ड है कि आपको विद टाइम जो है आपका जो स्मार्ट डिवाइस है वो आपको सजेस्ट करे कि क्या डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है। इसी तरह जब हम वर्किंग विद बॉट्स की बात करते हैं, सो नाउ इट इज पॉसिबल, आई हैव बीन टू रेस्टोरेंट्स जहां आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली लिया जाता है, जहाँ पे आपका जो खाना आपको सर्व होता है वो थ्रू अ बॉट सर्व होता है। सो दीज आर ऑल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स व्हिच आर ऑफ द फ्यूचर, बट वी आर सीइंग कि इन 10 टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स में से बहुत सारी ऐसी चीजें व्हिच हैव ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड। सो वी in the coming 4 to 5 years we will be living with bots, we will be having technology around us। और इस सब में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है दैट इज कोविड-19। ऑब्वियसली इट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टाइम लिविंग इन कोविड-19। द वर्ल्ड वाज स्ट्रक विद कोविड-19, पूरी दुनिया की इकोनॉमी गॉट अफेक्टेड। लेकिन अगर हम आईसीटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आईसीटी की यूजेज जो है वो it went to an entire new level with COVID-19 coming in. Hospitals are using ICT. Education sector has started using ICT. IT sector तो already use कर रहा था। आज मैं और आप जो communicate कर रहे हैं, I am here in Lahore, whereas you guys are in Sindh, ये possible हुआ through ICT. Travel restrictions खत्म हुई, physical interactions जो है वो convert हो गए into online interactions। पिछला पूरा एक साल you guys are students, आप जानते हैं that going on premises to your universities was so difficult। ICT थी जिसने it helped you connect to each other with your teacher, have your classes online। ये सब possible हुआ through COVID-19। और यही मैं emphasize करना चाहूँगी कि despite the challenges of COVID-19, पिछले 2 सालों में Huawei की business growth has exponentially risen। If you see 2019 में we were at $123 billion, but last year we were at $136 billion। And with that, our investment in the R&D sector also increased to $21.8 billion। So I would rather say that COVID-19 was a blessing in disguise for a growing economy like Pakistan, कि हमारी business development जो है and our ICT development जो है it did not stop, but एक बहुत boost आया in that development। Now when we talk about ICT sector में development, when we talk about new trends, हमने बहुत बात की कि दुनिया AI की तरफ जा रही है, IoT की तरफ जा रही है, क्लाउड सिस्टम्स की तरफ जा रही है। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सबके लिए, क्या हम इस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास ट्रेंड और इनेबल्ड यूजर्स हैं? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटर्स हैं? उसका जवाब है नहीं। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया में द आईसीटी टैलेंट जो है उसका एक डेफिसिट है, एक गैप है व्हिच नीड्स टू बी कवर्ड। ठीक है, और इसी के लिए कंपनीज लाइक Huawei and even our competitors वो एक constant investment कर रहे हैं into the development of talent, ताकि in the coming years by 2025 or 2030 we have talented resources। 10 million ICT talented resources का gap predict करते हैं experts। The World Bank study says that। So the reason why it is important, the reason why you guys are really important is because आज का student जो है वो कल को इकोसिस्टम में यूजर होगा, वो कल को इकोसिस्टम में इम्प्लीमेंटर होगा टेक्नोलॉजी का। So it is very important कि आप लोगों को at this stage ट्रेन किया जाए, इनेबल किया जाए। और इसी के लिए अगर Huawei की बात करें तो Huawei has 3 major ICT talent development programs, जिसमें the first is our Huawei ICT Academy program, your university।
is a recognized Huawei ICT Academy. आपके पास trained and certified instructors मौजूद है, faculty मौजूद है, who can train you on Huawei courses, Huawei certifications and technology. Then we've got popular programs of our Seeds of the Future, internship campaign, and the program जिसकी आज हम डिटेल में बात करेंगे is the Huawei ICT competition. So all these programs are being made for local talent development to serve not only Huawei but the entire talent ecosystem in future. तो ICT Academy के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी because उसके लिए you can contact your university focal person. आपकी university already ICT Academy है, you've got trained and certified instructors on campus who can deliver Huawei trainings, and you can not only take Huawei trainings on your campus, you can visit our website, our online resources, get practical experience, get an opportunity for free Huawei certification, be a part of our internship drive, get an opportunity to get jobs in Huawei. So इसकी डिटेल हम बहुत ज़्यादा नहीं शेयर करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आई होप आपको ICT Academy का दे दिया हो. 23 हमारी टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स हैं, जिसमें we've got some very popular technology domains like datacom, AI, IoT, security, 5G, data center, WLAN, 100+ certification exams हैं, जिसमें associate, professional and expert levels are there. Now let's talk a little about the ICT competition, जिसके लिए हम सारे आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. So going briefly into the history of the competition. 5 years back, 2016 में we did a competition in Pakistan, जिसमें around 1,000 students participated, and we were not able to cover a lot of cities. लेकिन उस competition की हमें इतनी appreciation मिली from the universities, from the government, from the Higher Education Commission, that since 2017 a formal competition has been going on under the Middle East region, and 2021 is the 5th edition of this competition, जिसमें 10 Middle East countries, for example Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Qatar, UAE, and many others are going to participate. Around 20,000+ students are expected to participate, जिसमें से the top students will compete with each other, and 10 countries say yes. Is there any question? Okay, if there's no question, I can continue. So, talking about the history of the competition, Pakistani teams have done so well. पूरे Middle East में, we're known to have the best teams. And पिछले सालों में, we were not able, not only able to achieve second, third prizes, but last year our team won a prize of $20,000 US. $20,000 US को अगर आप करें ना convert and उसको divide करें, तो around 33 to 34 lakh rupees बनते हैं, जो कि हमारे students ने win किया, and they got this prize. So imagine, you guys having the opportunity to win such a prize in the coming 2 to 3 months. So I'll go further into detail regarding the timeline of the competition. Our website is launched. We will be conducting registrations till the 10th of October. And from 20th of October, we'll be starting our national preliminary testing. जिसके बाद we'll have trainings for the excellent students, national finals होंगे, selection होंगी, and the top 6 students are going to go to our regional finals. Regional finals were being held in our headquarters in China, in the past years, but it is very unfortunate. Since last year, we have been doing these finals in Pakistan at our Islamabad headquarters. But inshallah, if the situation gets better, so from next year we can arrange teams going to our headquarters as well. जी बताइए. Okay, I would request if you could have the questions in the end, because अभी भी मेरे पास थोड़ी सी चीजें हैं. हो सकता है आपका क्वेश्चन during the presentation आंसर हो सकता है आप बाद में भी पूछ सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी वीडियो क्लियर नहीं है, स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही, so please feel free to interrupt. Okay.
So as I was mentioning, for our practice track, individual based, आपका written exam होगा मीटिंग को प्रोग्राम के लिए 60 questions जो कि ऑनलाइन किया जाएगा। जो नेशनल फाइनल है वो भी ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें हमारा written exam होगा और उसके बाद our experts will do some evaluations via interviews and lab testing। उसके बाद 6 students will compete in the regional finals, which will be a written and lab exam, which takes around 2 to 3 days। हम आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे, हम आपको इन इस्लामाबाद जो है 3 डेज के लिए आपका स्टे होगा एंड आपका सारा का सारा कॉम्पिटिशन होगा। The prize money for this competition is $25 million, along with some prizes such as second, third prize winners at the national level, and also at the local level, national level. We've got several prizes, awards, certificates, certification opportunities for top students, for your teachers, for your ambassadors. And not only do we have prize money and Huawei devices, but we also have a very interesting program with our local human resources department. Huawei ICT competition national winners will get direct recruitment opportunity in Huawei, whereas top 100 students will be interviewed, and after successful interviews they'll be placed in Huawei enterprise and career business groups. Top students will also be recommended to our GCC countries, जिसमें Middle East की countries are there. So competition में participate करने का तरीका बहुत आसान है। You need to visit our website e.huawei.com/talent, register for the Middle East competition, enter Pakistan and your university information. Once you register for the competition, you will have access to our learning space. Learning space में there's course material, there's learning videos, courses like AI, 5G, IoT, big data, datacom, security, WLAN, storage, सारे के सारे materials are there on our learning space, जिसको आप access कर सकते हैं। Competition की guidelines are all there at the learning space. Competition content is all there, videos, learning materials, simulation tools, even mock exams of how to prepare yourself for the competition is there. So जितना जल्दी आप register करेंगे, आप उतना जल्दी access आपको मिल जाएगी to the competition space, और उस competition space में आप prepare कर सकते हैं for the competition. Because honestly speaking, the competition is not easy. Pakistan से around 11 to 12,000 students will participate. उसमें से coming into the first cut of 500 students and then into the national level of 100 students, आपको बहुत तैयारी करनी है, आपको prepare करना है. You have to be, you have to make yourself stand out from the other students. उसके लिए बहुत important है that आप self learning आज से ही शुरू करें. So my colleague Anam is going to share in detail the registration process. लेकिन just in general, अगर आपका Huawei account already है, you just need to log in and register. If you don't have a Huawei account, it will take you 5 to 6 minutes to make the Huawei account and then sign up for the competition, जिसकी detail मेरी colleague आपसे share भी करेगी. So this is our QR. You can go to our website. I'd like you to scan this QR. या फिर जो links provided है, we'll share the link in the chat box as well, ताकि you can become a part of our journey, register for the competition. So I hope मेरी presentation से आपको Huawei की profile, हमारे talent development programs and हमारा जो competition program है उसके बारे में clarity मिली होगी. I'd like to now request Anam to share the registration process with you all. अगर आपके कोई questions है, you can type in the chat box or you can just unmute yourself and ask us. Thank you very much. Over to you, Anam. Okay, thank you, Fatma. Hassan, can you please share the slides? Yep. Just give me a moment, please. Thank you so much. If you have any queries, you can just write. Thank you. All right. So Anam, can you see my screen? Is it visible, everyone? Yes, it's fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next slide, Hassan, please. Okay, so what you have to do is just go to
Next slide, please, Hassan. Go to Huawei Talent Portal and then click ICT Academy. After that, click on ICT Competition Middle East. Now you need to click on Competition Registration. Next slide, please, Hassan. After that, it will take you again to the Huawei Talent. Again, if you don't have a Huawei account, create your account either using your mobile phone number or using your email. Can you please move on to the next slide? If you have used your email to get yourself registered, a link will be sent to your email address. Just click on that link and activate that account. Okay? Once your account has been activated, it will take you back to the login window. Just log in through your ID and password. Once you have successfully logged in, you will have to click again on the competition registration. Just add credentials on the registration window. And once you see the message registration successful on screen, your registration has been completed. Okay, that's it. Hassan, can you please move on to the next slide? Now, if you already have a Huawei account, it's super easy. Just log into your account, go to ICT Competition, Middle East, and then enter your information and you have successfully registered. Now, Hassan, next slide, please. Now, the next step is once you have successfully registered yourself, now go to Learning Space, click on View Courses. In this section, you have all the learning material available. All the information regarding the competition, of the voice notes, slides, past papers, everything is available. Just register to your first course and then you can start studying. That's it. Thank you so much. If you have any, you can ask. Sorry. If you have any questions, you can just write it down in the chat. Hello? Can you hear me? Yes, ma'am. हेरा पूछ ले सबसे, हेरा पूछे सबसे, कोई क्वेश्चन है तो बात करें, किसी स्टूडेंट क्वेश्चन है तो पूछ ले. यस यस हेरा, यस मेरा एक क्वेश्चन है. जी मोहम्मद अली, यू कैन आस्क. यस मैम, ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, मतलब इसके अलावा और कोई कंपटीशन के अंदर मतलब इन्वॉल्व नहीं होना, मतलब कि ये हमारी फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद हमें कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा रजिस्ट्रेशन होगा या फिर कोई और है प्रोसेस वगैरह स्टूडेंट के? Okay, so once you have successfully registered, all your details and all the updates will be sent to you on your email address. Okay. Yes. Okay. So do we have any other question? I guess not. So over to you, Hassan. Okay, yes, we have another question. Yes, Javed. मैम, सेम मोबाइल पे 2 अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं? Sorry? एक ही डिवाइस पे 2 अकाउंट इस्तेमाल? नहीं, you need to register with your own account because आपका जो account है वो bound होता है with your national ID. So एक यूजर एक ही अकाउंट के साथ जो है वो लॉगिन और रजिस्टर कर सकता है. If you use 2 accounts, it is going to be unfair and you may get disqualified. So please take care about that. मैम काफ़ी सारे को जिस दिन को हमने रजिस्टर करवाया था, कुछ ने रजिस्टर जो है बाय ईमेल नहीं किया तो बाय नंबर किया है. तो वो कह रहे हैं कि हमारा अगर कोई इशू तो नहीं है, बाय नंबर हमने किया है. और लेकिन बेहतर ये होगा कि वो कंपटीशन स्पेस में जाके अपना ईमेल आईडी जो है वो ज़रूर एंटर करें. बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे नोटिसेस आपको ईमेल पे शेयर होंगे, तो अगर आपका ईमेल मौजूद नहीं है तो यू नो इट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू रिसीव नोटिसेस. क्या रजिस्टर करें? ठीक है, दैट्स ओके. अच्छा, कोई और स्टूडेंट, अच्छा ये और कोई स्टूडेंट जो रह गए हैं, बाकी मोहम्मद अली मौजूद हैं, और कोई स्टूडेंट जो रह गए हैं, 1 बजे और सेशन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो. आप उनको बता दें दोस्तों को, जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर रह गए तो 1 बजे दोबारा एक सेशन होगा जो उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा और मोहम्मद अली गाइड करेंगे उसको. ठीक है जी सर, ठीक है मोहम्मद अली, इंशाल्लाह ज्वाइन विद मोहम्मद अली सर. ओके, Thank you so much, sir. All right. So now, shall we proceed?
Yes, Hassan, you can continue. All right. So now I'll be taking a short quiz. As Fatima mentioned during the presentation, that we have arranged a few prizes and gifts. So I'll be asking few questions, and whoever answer the questions correctly will give away gifts to them. So my first question is, what is the sales revenue of Huawei in 2020? Just post your answers in the chat box so that I know. I'll repeat the question. What is the sales revenue of Huawei in 2020? Okay, there are some replies in the chat box. All right. 386 billion, Anam Amir, and then Espana's 136 billion. 136.7 low. All right. So Espana's and Maz Ahmed Sheikh. All right. Sir, 136.7 billion. Okay. So Miss Hira, can you please note down their names? Yes, sir. I am taking screenshot of their names. Is the correct answer? Just note down their names. All right. So my second and last question would be, Huawei's headquarters is situated in which state of China? एम्बेसडर्स रिप्लाई कर सकते हैं? Yes, yes. Okay, Javed, Shenzhen. Beijing. Sir, There are Shenzhen. some replies. Yeah, Saifullah Sir, says Shenzhen. Situated Shenzhen in China. Shenzhen, sir. Shenzhen in China, sir. yeah, Shenzhen is the correct answer. Miss Hira, please note down their names. Yes, sir. I am doing. Abdul Aziz. Sir, excuse me, sir. Yes, Maria Nisa. Sir, my answer was absolutely Beijing. लेकिन सर मेरा वो टाइप बॉक्स मिल नहीं रहा, तो आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड में क्या करूँ, मुझे मिल नहीं रहा, मैं टाइपिंग नहीं कर पा रही. Okay, you can drop the proper answers in the chat box. We'll see who messaged first, and then we'll finalize the winners आपके university point of contact के साथ. Just don't worry. All right. मिस थोड़ा करे मैं कैसे, मतलब आपने क्या कहा, मैं अपना आंसर कहाँ टाइप करूँ, यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स मिल नहीं रहा असल में ना, इस ऐप के थ्रू. Just Maria, just contact with the ambassador, student ambassador, Miss Hira. Just she'll just note down your name, okay? All right. Yes, So मारिया, now, आप मुझसे आके मिलें या आप अभी कहाँ हैं? फिर आपको बताती हूँ. all right. So now we'll move on to the game. So now I'll be showing you a couple of images. You have to guess what the image is all about. So just give me a moment. I'll share my screen. Please first confirm that the screen is visible or not. So can you see my? Yes, sir. Your screen is visible. All right. Please just write down your answers. Can you please let us know कि ये जो बिल्डिंग है ये कहाँ पर है और ये कौन सी बिल्डिंग है? Just write down your answers in the chat box. सर कौन सी? This one? शो नहीं हो रही. तस्वीर में जो शो हो रही है ना, लोगों के नीचे जो बिल्डिंग है. Hassan, it's not visible. Is it visible now? Next slide, please. Not visible, sir. It's still showing the No, sir. coverage. Visible now, sir.
सर रीशेयर कर लें आप. Okay, is it visible now? Yes sir, it is visible now. Okay. Yes, sir. All right. This one. It's pretty easy, I believe. There are some replies. Yep. So we'll just I'll show You all guys the have to compile all the Yeah. replies and send together. Individually ना भेजें, इकट्ठा करके 1 2 3 4 करके आपको भेजने हैं. Yep. And then the last one. Okay. So just stop sharing my screen now and we'll see कि किन्होंने correct answer दिया. All right. Okay, Shenzhen, China, headquarter. Huawei Notepad 3. All right. I believe किसी के भी सारे correct नहीं हैं, but we'll give away the gift to the one जिसका सबसे ज़्यादा close है. Okay, Miss Hira, can you please note down? Yes sir, I am noting. Yes, we are getting some more replies. Father Iman said Huawei MatPad. सफदर अली इनका थोड़ा क्लोज है, आप काइंडली इनका नेम नोट डाउन करें. Okay sir. Okay. Sir, I have a question. Yes, yes, Saifullah. सर हमने ये पार्टिसिपेट किया है, इसका हमने मेल पे किया है, तो क्या हमें ये नोटिफिकेशन वगैरह आएगा? हम क्लास में थे एक्चुअली, तो आपका प्रॉपर जो है ये सेशन अटेंड नहीं कर सके. यस सर. सर इसके बाद एक और सेशन है, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं. आप लोग 1 बजे एक और सेशन होगा, वो ज्वाइन कर लीजिए. अच्छा, एक सेशन और भी है और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और सेशन चाहे तो सेशन ज्वाइन कर दीजिएगा. Miss Hira, can you please note down Maaz Ahmed Sheikh's name also? Done sir. Okay. All right. So now, hopefully in the coming days, we'll be posting all the gifts to you. All right. So, Anam, over to you now. I guess that's it for today. Fatma. Thank you very much. I'd like to thank the entire team of your university for organizing today's activity. It was a great pleasure for us from Huawei, to attend this online session. Thank you very much. I, wish you all the best for your future, and I'd really like to hope to see, one of you in the national team. And most probably winning the $20,000 award money. I'd just like to check if Charles is still here. If Charles would like to add anything, if he doesn't have anything to add, we can actually conclude today's session. Yeah, Charles, are you there? Hello. अच्छा मैम, ये जो winners हैं ये अभी announce होंगे या बाद में announce होंगे? I think Hassan will confirm to you the winners and he can, coordinate with you.
Before that, we've got Charles from our Middle East office. He's specially here, to encourage you all to participate and register in the competition. So over to you, Charles. After you, we're going to conclude today's session. Okay. Hello, everyone. Yeah. I have been to Pakistan 2 times. Yeah. I love living in Pakistan. Yeah. Our brothers. I'm Charles Law. Yeah. I'm from China. From the Shenzhen. Yeah. As you mentioned, the Shenzhen is my hometown. Yeah. I think the September is a harvest season. Yeah. I'm glad you can practice in the ICT competition 2021. I think this year has been a difficult year. Yeah, difficult year. But also this year is full of hope. Yeah, I hope you can get the good prize in the competition. And also, I want you master better technology for your work in the future. Yeah. As you know, the Huawei will hold the ICT competition every year. Yeah, for our Middle East region, for our Pakistan. Yeah, our business students can go to can join the global final, regional final or global final. Yeah, responsible for the Pakistan. I think this is the honor for all of you, for students. Yeah, you can join the global final with the other. I think this is a good opportunity. Yeah, you can communicate with other countries, young people. Yeah. I hope everyone can get the good prize. Yeah, good result in the competition. Okay, thank you. Thank you, Charles. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Most welcome. I hope we can have a group photograph. If everybody can open their cameras, we can have a group photo. Hera, can you please ask them to turn on their cameras so that we can photo? Okay, ma'am. सारे लोग अपनी कैमरा ऑन कर लें. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. See you, inshallah. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Sarah, thank you, Hira, Farisa. Thank you so much. Allah Hafiz. Okay, ma'am. Thank you. Welcome. Thank you. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Thank you. Okay, everyone can leave now. Everyone can leave now. Allah Hafiz.